everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss Unit 12, जिसका नाम है Population Growth and World Food Supplies. First, we'll discuss difficult word meanings extracted from first paragraph. So first word is alarming, जिसका meaning होता है causing fear, frightening या खतरनाक. Second word is incessant, which means never ending या मुसलसल. Third word is population, which means all the inhabitants of a particular place, यानी आबादी. Fourth word is economic, which means concerned with worldly necessities of life, यानी मुआशी. Fifth word is continents. It means one of the large land masses of the earth, यानी बर-ए-आज़म. Sixth word is arable, which means capable of being farmed productively या cultivable, यानी काबिले काश्त. Seventh word is severe. It means intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality, यानी शदीद. Eighth word is vulnerable. It means at risk, which means कमज़ोर in Urdu. Ninth word is per capita. Per capita means per person और उर्दू में हम इसे कहेंगे फीकस. Tenth is grains, जिसका मीनिंग है a relatively small particle of something, यानी अनाज. 11th is declining, which means going down or growing worse, यानी किसी चीज़ का गिरते जाना या नीचे की तरफ जाना. 12th is quarter million. It means 1/4 of a million, यानी चौथाई million. 13th is unprecedented, which means unmatched, unexampled, यानी बेमिसाल. Let's move on to the explanation of first paragraph. First paragraph में writer इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर हम आज की पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो इट इज़ जस्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, ना तो रुक रही है ना कम हो रही है. और इसके इफ़ेक्ट्स किस चीज़ पे आ रहे हैं? फूड सप्लाईज पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा फूड प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा. इसे डायरेक्टली लिंक होना चाहिए इंसेसेंट ग्रोथ यानी नेवर एंडिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से, लेकिन इसका उलट हो रहा है. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस नहीं हो रहा. और ग्रेट प्रेशर किस चीज़ पर एग्जर्ट हो रहा है? हमारी फर्टाइल लैंड, वाटर, एनर्जी और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज पे, जो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? हमारी न्यूट्रिशनल नेसेसिटीज़ को फिल करने में. सो हो क्या रहा है कि जितने लोग पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं उतना ही फूड डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है, लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं. पिछले 25 साल के अगर सर्वे और स्टडीज़ को देखा जाए तो पर कैपिटा बंदा जो है उसके अंदर अगर फूड डिवीज़न को देखा जाए तो फूड रिसोर्सेज जो हैं या नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं. व्हिच मीन्स कि अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती रही तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जिससे हम फूड हासिल कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. और जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो एग्जाम्पल्स अनमैच्ड हैं. मतलब पिछले वक्त में या पिछले सालों में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीमेंट नहीं देखने में आई है. So world population and its trends are given below. 10,000 years ago, 10 million people होते थे, and by 1850 population was 1 billion. 80 more years to reach 2 billion in 1930. 45 years it doubled again and 4 billion in 1975. 12 years to reach 5 billion, which is 1987. 6 billion in 1999. By the year 2020, there will be 8 billion people. Let's move on to second paragraph, and there is only one difficult meaning in this paragraph, and which is exponential. Exponential का मतलब होता है becoming more rapid, यानी तेज़ी से. And its explanation is कि हर दिन 250,000 people जो हैं वो population में add हो रहे हैं, which is quite a big amount. मतलब 1/4 मिलियन लोग हर दिन population में add हो रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि population कितनी rapidly increase हो रही है. The exponential growth is mostly happening in developing nations. जो developing nations है, advanced nations हैं, जो fully developed हैं, वहाँ पे ज़्यादा population growth हो रही है, which means उनको consequences भी ज़्यादा face करने पड़ेंगे over population के. Thank you.